Bismillahirrahmanirrahim. Discussion first year and second year full course test Saturday morning 15 August. Question number first. A virus whose capsid is arranged as many-sided structure is called as helical, complex, filamentous, icosahedral. So correct answer is icosahedral, in which the outer envelope are covered having about 20 triangles. So option C is correct. Which component is present in envelope viruses but absent from non-envelope viruses? Nucleic acid, capsid, capsomere, lipid membrane. So lipid membrane is the correct option, which is absent in non-envelope viruses. Question number 3. A viral disease affecting plants is most likely transmitted through damaged plant tissue. Plant usually infected by viruses, bacteria and fungus through damaged tissue. A plant is injured, so the injured site is the transmission of the pathogen. So option first is correct. Question number 4. HIV cannot reproduce independently because it lacks genetic material, cellular machinery, surface protein, reverse transcriptase. HIV cannot reproduce independently or without host because it has no protein synthesizing machinery or cellular machinery. So viruses usually use the protein synthesis or cellular machinery of the host cell. Option B is correct. Which finding most strongly indicate the progression of HIV infection toward AIDS? Increased platelets, increased antibodies, severe CD4 cell reduction. So this one is the correct answer because HIV infect CD4 cell or T helper cells. Option C is correct. Question number 6. Glycerol released during fat digestion can enter respiration after conversion into an intermediate of glycolysis. अब glycolysis intermediate क्या है? Glyceraldehyde. So option first is correct. देखो जब फैट डाइजेशन होती है तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है. ग्लिसरॉल जो है ये कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड में और फैटी एसिड जो है वो यूजुअली कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में और फैटी एसिड फिर एसिटाइल कोए में और इस तरीके से क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं. ठीक है. और ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्टली एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में. ठीक है. वो 3 कार्बन कंपाउंड जहां पे होता है स्टेप्स उसी में ये एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड. क्वेश्चन नंबर 7. The nitrogen removed from amino acid during respiration is mainly converted into glycogen, glucose, pyruvate, urea. Urea is the correct answer. When nitrogen is removed from the amino acid, ठीक, by the process of deamination, so which quickly converted into ammonia, and ammonia then converted in the liver into urea. So the correct answer is urea. If urea is absent in the answer, then ammonia.
Option B is correct. Question number 8. Which respiratory pathway is common to glucose, fatty acid and many amino acids? All the three major food, carbohydrate, protein and fats, ultimately enter the cellular respiration or Krebs cycle. So Krebs cycle is the correct answer. Glucose enter glycolysis, fatty acid into Krebs cycle, acetyl-CoA, and amino acid into keto acid, and keto acid is used in the Krebs cycle. Option C is correct. Question number 9. Which biological molecule primarily store hereditary information? Nucleic acid, RNA or DNA? Question number 10. Condensation between two monosaccharides result in the formation of disaccharide and release of water. Two glucose molecules combine to form disaccharide and the reaction is condensation, so release water molecule. Question number 11. Water participate directly in the digestion by forming peptide bonds, hydrolyzing large molecule, removing all ions, raising activation energy. Water bring about hydrolysis reaction, lysis in the presence of water and convert large molecule into smaller one or causes breakdown of large molecule. So option B is correct. Hydrolyzing large molecule. Question number 12. The effectiveness of water as a solvent for salt is mainly due to its polar nature. Water is a polar molecule, and that's why it is a major solvent or universal solvent. Water, question number 13. Water molecule adhere to the wall of a narrow tube due to which property? Adhesion, ionization, neutralization, hydrolysis. Adhesion. Water molecules attract each other and also attach to the polar surfaces of the body. So adhesion is the main cause of binding water molecule through a narrow tube, through the wall of a narrow tube. Question number 14. The main storage polysaccharide in animal cell is glycogen. Carbohydrates are stored in animal cells in the form of glycogen, especially muscle cells and liver cells. And carbohydrate is stored in plants in the form of starch. So option C is correct. Question number 15. Lactose is formed from glucose and fructose, glucose and galactose, 2 fructose units, 2 galactose units. Glucose and galactose, these two monomer combine to form lactose, and lactose is a disaccharide. So option B is correct. Question number 16. The secondary structure of protein is stabilized mainly by hydrogen bond between alkyl group only, adjacent fatty acid, peptide backbone groups, separate nucleotide. Peptides backbone groups. Option C is correct. 17. Replacing one fatty acid of a triglyceride with a phosphate containing group produces steroid, phospholipids, polypeptides, glycoproteins. So phospholipids. Option B. Question number 18. The molecules that carries amino acid to ribosomes
mRNA, tRNA, ribosomal RNA, DNA. Transfer RNA or soluble RNA. Transfer RNA carry amino acid from in the cytoplasm to the site of protein synthesis or ribosome. Option C is correct. Question number 19. Which structure is normally found in a plant cell but not in a typical animal cell? Which structure is absent in animal cell? Plasma membrane, large central vacuole, mitochondria and Golgi apparatus. Large central vacuole is absent in plant. So option B is correct. Question number 20. Prokaryotic DNA differ from nuclear eukaryotic DNA because prokaryotic DNA is generally linear and enclosed, made only of RNA located in mitochondria. The major difference is circular and unenclosed. Prokaryotic DNA is circular and not enclosed by nuclear membrane. So option first is correct. Question number 21. A nucleolus is primarily involved in the formation of ribosomal subunits, smaller subunit and larger subunits. So option B is correct. Question number 22. Protein synthesized on rough endoplasmic reticulum usually moves first to Golgi apparatus. Protein synthesized in the rough endoplasmic reticulum and transported by means of vesicles into the Golgi apparatus for further processing. So option C is correct. Question number 33. A cell requiring large amount of ATP would be expected to contain many mitochondria. जिन सेल्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और जो सेल सिक्रीटरी होते हैं नेचर में, तो उनमें गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. सो ऑप्शन ए. Question number 24. A chromosome consists mainly of two components, DNA and histone proteins. When protein combine with DNA, it forms chromosomes. Then it is called chromosome. Option B is correct. Question number 25. A receptor that responds to changes in temperature is temperature receptor. क्या कहलाते हैं? Thermoreceptors. May be hot, may be cold. So thermoreceptor, option C is correct. Question number 26. Damage to dendrites would most directly interfere with the neuron ability to release hormones, form myelin, produce cerebrospinal fluid, receive information. हर न्यूरॉन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन. ठीक. डेंड्राइट का मेजर रोल है टू रिसीव इंफॉर्मेशन. तो अगर डेंड्राइट डैमेज होते हैं किसी न्यूरॉन के, तो कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा? इंफॉर्मेशन रिसेप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेल बॉडी अगर डिस्ट्रॉय होता है या इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्ट होगी. एक्सॉन इफेक्ट होता है तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इफेक्ट होगी. ऑप्शन फर्स्ट, रिसीव इंफॉर्मेशन. 27. ड्यूरिंग depolarization of a neuron, the membrane become less negative mainly because of the inward movement of potassium ion, sodium ion, chloride ion and protein ion. Normally inside the membrane negative होता है. ठीक है.
लेकिन जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन होता है, तो मेम्ब्रेन की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है. द मेम्ब्रेन मस्ट बी लेस नेगेटिव. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम आयन. Question number 28. Which sequence correctly represent a simple reflex arc? Normally, usually reflex arc, the path followed by a reflex action during nervous coordination or reflex action is called reflex arc. And each reflex arc usually consists of 5 components. Receptor, sensory neuron, associative neuron, motor neurons and effector. So ये करेक्ट सीक्वेंस है. अब आप जो मेंशन सीक्वेंस है इसमें करेक्ट सीक्वेंस आप चूज करें. इफेक्टर, रिसेप्टर रॉन्ग. receptor, motor neuron, sensory neuron wrong. Receptor, sensory neuron, motor neuron. Option C is correct. Question number 29. Salivation at the site of familiar food. Familiar food का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप पहले खा चुके हो या उसका टेस्ट का आपको पता हो. After repeated association या बार बार आप उसको यूज कर चुके हो. Spinal reflex, condition reflex, withdrawal reflex, stretch reflex. Condition reflex. Question number 30. Damage to the medulla oblongata is immediately life-threatening because it regulates vision and hearing, memory and learning, breathing and heartbeat. So medulla usually control life processes, vital life processes like breathing and heart rate. So अगर medulla में डैमेज होता है तो लाइफ रिस्क में पड़ जाती है. So option C is correct. Question number 31. The part of the brain most directly involved in intelligence, reasoning and voluntary action is the cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain and mainly involved in intelligence, learning, memory, reasoning, judgment, speech, and over here is the correct option is cerebrum. Question number 32. After completing a reaction, an enzyme normally become part of the product, remain chemically unchanged, changes into substrate, loses its active site. So after completion of the reaction, enzyme remain unchanged. Option B is correct. Question number 33. According to the induced fit model, substrate binding causes the active site to disappear completely, become permanently rigid, adjust its shape slightly. So induced fit model की मुताबिक एंजाइम क्या करते हैं, जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करता है तो ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपना बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट जो है वो चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट आ सके. Option C is correct. Question number 34. An enzyme has maximum activity at pH 2 but little activity at pH 8. It most likely function in which part of the body? Stomach. The most acidic or strongly acidic part of the body is stomach, which has low pH 1.3 to maximum 2. So stomach is the correct answer. If substrate is abundant, increasing enzyme concentration will initially bring about what change? Decrease product formation, denature the substrate, increase reaction rate, stop molecular collision. Increase reaction rate.
अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है और आप साथ एंजाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, a non-competitive inhibitor commonly reduces activity by binding to an allosteric site, competing for substrate molecules, increasing active site, converting product to enzyme. Non-competitive inhibitor bind to the allosteric site and competitive inhibitor bind to the active site and bring about change in the enzyme shape and reduce the activity of the enzymes. So option first is correct, bind to an allosteric site. Question number 36. In experiment on chemical evolution, electrical spark represented which of the following? Primitive organism, atmospheric oxygen, lightning energy, solar cells. अर्ली स्टेज में एनर्जी प्रोवाइड होती थी रिएक्शंस के लिए लाइटनिंग से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है, ये वो एनर्जी सोर्सेस थे। तो एक्सपेरिमेंटली मिलर और यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि लैब में उन्होंने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज किए, तो वहां पे एज एनर्जी सोर्स जो है क्या यूज किया? इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क रिप्रेजेंट lightning energy at the primitive earth condition. Option C is correct. Question number 38. Which statement represent a major weakness of the Lamarckism? Inheritance of acquired character. लेमार्क का बेसिक आइडिया ये है कि जो कैरेक्टर कोई इंडिविजुअल सोमैटिक कैरेक्टर, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, वो अपने लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं, उसको उसके आप करते हैं। एंड और ये वीक पॉइंट था उसकी थ्योरी का, जो इसको रिजेक्ट कर दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। इन डार्विनिज्म, individual possessing unfavorable inherited variation tend to reproduce more successfully, produce required adaptations, leave fewer offspring, change their gene deliberately. अच्छा, according to Darwin, variation is the main cause of evolution, and he mentioned that there are two types of variation, useful and harmful. ठीक, useful variation adjusts the individual in environment which reproduce more successfully than the individual that containing harmful variation. Harmful variation produce less individual and ultimately disappear, eliminated from the environment. So correct option है leave fewer offspring. जिस इंडिविजुअल में अनफेवरेबल वेरिएशन हो, उसके ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। Question number 40. Darwin praised struggle for existence results primarily from unlimited resources, overproduction, absence of variation, equal survival of all. Overproduction, जब इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं और रिसोर्सेस कम होते हैं तो फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41. Sertoli cells contribute to reproduction mainly by which contribution? Producing ova, nourishing developing sperm, secreting progesterone, storing semen. Option B is correct. Nourishing developing sperm.
So Sertoli cell provide nourishment and protection to the developing sperm. Option B is correct. Question number 42. The seminal vesicle add a fluid rich in fructose, mainly destroy sperm, nourish sperm, trigger menstruation, prevent testosterone release. Nourish sperm, provide nourishing material. So option B is correct. Question number 43. FSH in female primarily promotes development of uterine muscle, mammary gland, ovarian follicle, corpus albicans. FSH stimulate ovarian follicles, are follicle cells in the ovary for the development of ovum and for the secretion of female sex hormone estrogen. So option C is correct. 44. During the secretory phase, the uterine lining is mainly maintained by progesterone. Two hormone, ovarian hormone. Estrogen generate the functional layer, the primary layer of the endometrium, and then progesterone maintain and convert the functional layer into glandular layer, and then responsible for maintenance of pregnancy. ठीक? So correct option है progesterone. 45. Painful urination with pus discharge or purulent discharge is commonly associated with which sexually transmitted disease? Gonorrhea. गोनोरिया ऐसा इंफेक्शन है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पस डिस्चार्ज होती है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. The cell occupying lacunae in cartilage are called chondrocytes. देखो कार्टिलेज के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कार्टिलेज सेल्स एंड मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, ये चीजें होती है, और उनमें जो स्पेसेस होती है, द स्पेसेस आर फिल्ड विद लिविंग कार्टिलेज सेल नोन एज कंड्रोसाइट्स. ठीक, तो कार्टिलेज सेल जो है उसको यूजुअली हम कहते हैं कंड्रोसाइट्स. दे आर द लिविंग कार्टिलेज सेल्स. ठीक, और पूरा मैट्रिक्स जो है उसको सराउंड करता है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसको हम पेरिकांड्रियम कहते हैं. पेरिकांड्रियम के नीचे जो है फिर कंड्रोब्लास्ट सेल होते हैं. कंड्रोब्लास्ट सेल वो सेल्स होते हैं जो कंड्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 47. Bone can resist compression mainly because its matrix contain calcium salts. Bone अगर hard है, strong है, it is due to calcium phosphate crystal. Option B is correct. Question number 48. Smooth muscle differ from skeletal muscle because smooth muscle fibers are spindle shaped and non-striated. They are called smooth muscle because they are non-striated. They have no alternate light bands. That's why they are called smooth. So option C is correct. Question number 49. The thin filament of a sarcomere are composed mainly of actin. Thin filament or actin filament, इसका सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो एक्टिन है. और बेसिकली जो है थिन फिलामेंट, इनमें तीन टाइप्स प्रोटीन्स होते हैं, एक ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और सबसे ज्यादा एक्टिन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50. ATP is directly required in the cross bridge cycle to detach actin and myosin. क्रॉस ब्रिजेस को डिटेक्ट करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस तब डिटेच होते हैं कि एटीपी अवेलेबल हो. अगर एटीपी अवेलेबल न हो तो क्रॉस ब्रिजेस डिटेच नहीं होगी और मसल
कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट रहेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. डिटैच मायोसिन फ्रॉम एक्टिन. क्वेश्चन नंबर 51. The joints between the bones of skull are mainly of which nature, which type? Synovial, cartilaginous, fibrous. Fibrous joints. Sutures are fibrous joints. The bones are connected by fibrous connective tissue. Option C is correct. Question number 52. Mendel law of segregation state that the two alleles of a gene separate during gamete formation. So option B is correct. In the cross, heterozygous, dihybrid, heterozygous to dihybrid, heterozygous. When two heterozygous are crossed, when two F1 are crossed, so what will be the phenotypic ratio in the F2 generation? तो F2 generation में आपको कौन से रेशो मिलेंगे? 9-3-3-1. These ratios shows law of independent assortment. Question number 54. Gene positioned very close together on the same chromosome show high recombination, strong linkage, independent assortment, and no inheritance. When genes on the same chromosome lie very close to one another, they show strong linkage or complete linkage. So option B is correct. Question number 55. The percentage of recombinant offspring is commonly used to estimate dominant strength, gene distance, chromosome number, mutation type. Recombinant percentage. 1% recombinant frequency shows 1 centimorgan distance between two genes. तो 1% रिकम्बिनेशन शो करता है कि दो जीन में सेम क्रोमोसोम पे जो दो जीन होते हैं उनमें 1 मैप यूनिट डिस्टेंस है या 1 सेंटीमार्गन डिस्टेंस है. अगर 10% का रिकम्बिनेशन हो तो 10 मैप यूनिट और 10 सेंटीमार्गन डिस्टेंस होगा. तो जीन डिस्टेंस रिकम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग शो gene distance located on the same chromosome. 56. Which parent possesses an X-linked allele? Which parent passes an X-linked allele to all his daughter but none of his son? Only father. Father सन में सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास करता है और तमाम डॉटर में जो है एक्स क्रोमोसोम फादर से पास होता है. तो करेक्ट आंसर जो है इफेक्टेड फादर. अगर फादर इफेक्टेड हो तो सारे डॉटर इफेक्टेड होंगे. देखो मदर फादर अगर ये इफेक्टेड है, फर्ज करें हीमोफिलिक है, तो जितने भी डॉटर बनेंगे सब में फादर साइड से ये क्रोमोसोम जाता है और वाई क्रोमोसोम जो है ये सन में जाता है. ठीक है. तो फादर से सन में सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास होता है और डॉटर में एक्स क्रोमोसोम पास होता है. क्वेश्चन नंबर 57. अ हीमोफिलिक डॉटर विद अ नॉर्मल मदर. इसका मतलब है कि हीमोफिलिक डॉटर विद अ नॉर्मल मदर मस्ट हैव रिसीव्ड द हीमोफिलिक एलील फ्रॉम. इसका मतलब ये है मदर नॉर्मल है लेकिन मदर कैरियर नॉर्मल होगी
और फादर जो है वो भी हेमोफिलिक है, रिसेसिव एलील है, ठीक है ना। तो जिन डॉटर्स में ये दो एलील आएंगे रिसेसिव, क्योंकि फीमेल में एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स की अपीयरेंस के लिए 2 कॉपी जरूरी होती है, तो इन दोनों केसेस में एक फादर से एक मदर से रिसीव करेगा। मदर नॉर्मल है लेकिन कैरियर और फादर इफेक्टेड है, तो इसमें ऑप्शन है हेमोफिलिक डॉटर रिसीव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों से अगर रिसीव करे तब हेमोफिलिक रहे। क्वेश्चन नंबर 58, द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज auriculoventricular, राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 59, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एवी वॉल्स जब क्लोज हो जाते हैं तो फर्स्ट साउंड लब, और जब सिमिलुनर वॉल क्लोज होते हैं तो सेकंड साउंड आता है डब, ठीक। तो लब डब साउंड जो है या कार्डियक साइकिल को लब डब साइकिल भी कहते हैं। व्हेन कैरी ब्लड एट लो प्रेशर विदाउट एक्सटेंसिव बैकवर्ड फ्लो बिकॉज मेनी वेन्स कंटेन वॉल्स, वेन्स में वॉल्स होते हैं विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। Option C is correct. 61, which lymphatic organ filter blood rather than lymph? हम कहते हैं ना lymphatic system is a drainage system, और जितने भी lymphoid टिश्यू है, lymphoid नोड्स है, वो lymph को फिल्टर करता है, लेकिन कौन सा lymphoid organ है जो ब्लड को फिल्टर करता है? स्प्लीन। स्प्लीन इज द organ of the lymphatic system which filter blood. Old RBCs फिल्टर करते हैं, ठीक है ना, और वहां माइक्रोब्स वगैरह जो है उसको फेगोसाइटोस करते हैं। तो स्प्लीन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, एन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेस एंटीजन थ्रू इट्स वेरिएबल रीजन, variable region or antigen binding site. So option B is correct. 63, the foster secondary immune response is mainly due to the presence of memory cells. T memory cells, B memory cells जो है जब फ्यूचर में दोबारा इंफेक्शन होता है तो ये क्विक रिस्पांस शो करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64, वैक्सीनेशन यूजुअली प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है वो आर्टिफिशियल एक्टिव कहलाती है, और नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है वो कहलाती है नेचुरल एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 65, गूबलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग mucus. Goblet cells are mucus secreting cells. Option B is correct. Question number 66. Pulmonary surfactant is important because it prevents alveolar collapse. Surfactant has two functions: prevent alveoli from collapse and also antiseptic in nature, germs killer in nature. So option B is correct. Question number 67. Carbon dioxide diffuses from pulmonary blood into alveoli because its partial pressure is higher in the blood than alveoli. So option A is correct. Question number 68. Carbon monoxide in cigarette smoke reduces oxygen transport by binding strongly to hemoglobin. Carbon monoxide is the competitor of the oxygen and bind with heme to form carboxyhemoglobin. Option D is correct. Question number 69. The wave-like contraction that propel food through the alimentary canal
is known as peristalsis, and peristalsis is usually controlled by medulla oblongata. Option B is correct. Question number 70. Hydrochloric acid in the stomach help protein digestion by activating pepsinogen. HCl activate pepsinogen and also antiseptic germ killer. So option B is correct. Question number 71. Most absorbed monosaccharide reach the liver first through the hepatic portal vein. Hepatic portal system जो है that carry the digestive food from the small intestine into the liver. Option B is correct. Question number 72. The primary role of large intestine is the absorption of water and मिनरल्स या वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और साथ साथ मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. इफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोर वाटर देन नॉर्मल देन कंस्टिपेशन अकर. व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब लेस वाटर देन नॉर्मल देन लूज मोशन अकर और डायरिया. So option C is correct. Water and electrolytes. Question number 73. Urine travel from each kidney to the urinary bladder through the muscular tube known as ureter. Option B is correct. Ureters carry urine from the kidney to the renal pelvis. From the renal pelvis or kidney to the urinary bladder. Option B is correct. 74. Large plasma proteins normally remain in the glomerular blood because they are too large to cross the filter. Large protein and blood cells, they are unable to pass through the glomerular filtration. So option B is correct. Question number 75. Tubular secretion assists secretion of moving substances from blood to tubular fluids. Reabsorption में ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड में पास होती है सब्सटेंसेस और ट्यूबुलर सिक्रीशन में ब्लड से एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे ट्यूबुलर फ्लूइड में पास होती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 76. Increase ADH secretion causes the kidney to produce less concentrated urine, more dilute urine, less and concentrated urine. Option C is correct. ADH अगर इंक्रीज हो, एंटी डायूरेटिक है ना, तो वाटर प्रोडक्शन कम हो जाएगा. वाटर प्रोडक्शन का एंटी है और जब वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड बनेंगे. तो लेस एंड कंसंट्रेटेड यूरिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 77. Complete obstruction of urine flow by a large kidney stone may eventually cause kidney damage. Option B. 78. The most toxic common nitrogenous waste is ammonia. Ammonia is highly toxic and highly soluble in water. Option C. Question number 79. Monoclonal antibodies are useful in diagnosis because they bind to every protein, one specific protein, all nucleic acid, all cell membrane. One specific protein. That's why I said to be monoclonal, and they are obtained from a single clone. That's why monoclonal. Single clone. Single clone से identical clone से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये स्पेसिफिक होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज इट सिंथेसाइजेस RNA from protein, DNA from RNA, protein from DNA, lipids from glucose. Reverse transcriptase synthesize DNA from RNA and obtained from retroviruses. This enzyme is found in retroviruses. So option B is correct. 80. Question number 81.
Recombinant human growth hormone is used mainly to treat which disorders? Bacterial infection, growth hormone deficiency, blood clotting, viral mutation. Option B is correct. Growth hormone deficiency or dwarfism. Thank you.